Assalamu alaikum. Today we are discussing Thought Fox by Ted Hughes, who is majorly known for his animal imagery. So that's what he uses in most of his poems. So Edward James Hughes was an English poet, translator, and children's writer. Critics frequently rank him as one of the best poets of his generation and one of the 20th century greatest writers. He was appointed Poet Laureate in 1984 and held the office until his death. So he was given certain titles like OM, that stands for the Order of Merit, which is a Commonwealth Order of Merit that recognizes distinguished service in armed forces, science, arts, or literature. He was also given OBE, that stands for the Most Excellent Order of the British Empire. So this is also for chivalry or contribution to arts. He was FRSL, which is the Royal Society of Literature. So it is a learned society founded in 1820 by King George IV to reward literary merit and excite literary talent. So he was such a creative poet, and here he uses his creative process of poetry through the coming of a fox that comes with a creative process, or that comes like a creative process comes to a poet. So let's see what's there in the poem. So here the poet is imagining the very presence of a fox there. I imagine this midnight moment's forest. Something else is alive beside the clock's loneliness and this blank page where my fingers move. So here he says that it is middle of night and I am imagining as if the night is actually a dark forest encircling me at the moment. I feel the presence of something else besides the clocks. Through the window I see no star, something more near, though deeper within darkness, is entering the loneliness. So here he says, when I look out through the window, I see no star. Still I feel that something is coming nearer to me and is entering my solitude as such. It is appearing through the darkness surrounding me. Still I am unable to discern the exact reality of the coming identity. Like he is unable yet to recognize what thing is coming to him. Cold delicately as the dark snow, a fox nose touches twig leaf. To I serve a moment, that now and again now, and now and now. Now actually, now I feel that it is a fox coming out of forest. The nose of the fox, which is snow-clad, touches the small branches as well as the leaves of the forest trees in a delicate manner. Later on, the two eyes of the fox become visible, which seem to come nearer and nearer to me through the dark forest, or through the midnight that is surrounding myself. So this now and now and now and now means that it is coming nearer and nearer and nearer. Sets neat prints into the snow between trees, and verily a lame shadow lags by stump and in hollow of a body that is bold to come. So here he says that the fox is reaching nearer, and each moment it is on its continuous walk, and it is leaving its neat, tidy footprints on the snow between the trees. Then its body becomes almost visible to me. I feel a shadow of the animal pausing once for a while near the broken trunk of a tree. Then the fox seems to advance physically. Now, across clearings and I are widening
a deepening greenness, brilliantly, concentratedly, coming about its own business. Now, the fox, seeming enough, goes on advancing towards the poet through the darkness and the surrounding midnight forest. It finds its way through the clearing. Now its twinkling eye becomes visible through the deep, vast greenness spread around it, the greenery he's talking about. Still, it is approaching carefully and cautiously, as if self-concentrated, like it is concentrating in a very brilliant manner on all the gatherings around, like the animals are preying on something. It seems to take its normal course as if it is going along about its own business, like it is altogether on its own work. Till, with a sudden sharp hot stink of fox, it enters the dark hole of the head. The window is starless still, the clock ticks, the page is printed. Now, in the last stanza, the poet says that suddenly I feel a sudden sharp hot stink smell of the fox, and the fox enters the dark hole of my head. Now, the fox, after being treated in this way, becomes the cause of inspiration or intuition for me. Although no star is visible through the window, and my clock goes on ticking by, yet my page is printed, or typed, or written somehow. The blank pages which now written, which was in beginning, it was blank, but now the poet has got a poem, he has got a work on it, the page is no more blank. So this is the paraphrase of the poem Thought Fox. Now coming to its critical summary. So in this stanza number 1, जो पोइट है वो एक ऐसे फॉर एग्जांपल कॉटेज में बैठा है, ऐसी प्लेस पे बैठा है जो कि बिल्कुल फॉरेस्ट के दरमियान है. तो वो कह रहा है कि मुझे इस वक्त स्टैंजा नंबर 1 में वो कह रहा है कि इस वक्त मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे मुझे मूवमेंट फील हो रही है. मुझे लग रहा है कि गो मेरे आसपास अंधेरा है, लेकिन कोई और जानदार है जो मेरे आसपास है. और जो घड़ी की जो एक टिक टिक है उसके अलावा, और वो जो एक ब्लैंक पेज मेरे सामने है, इन दो चीज़ों के अलावा कुछ और भी है जो मैं फील कर रहा हूँ. फिर सेकंड स्टेंजा में वो कहता है कि विंडोज से मैं जब बाहर देखता हूँ तो मुझे कोई रोशनी नज़र नहीं आती, स्टारलेस नाइट है, स्टार्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कुछ है जो मेरे बहुत करीब है. और ये उस डीप डार्कनेस में से मेरी उस लोनलीनेस, मेरे आसपास जो तन्हाई है, जो माहौल है, कुछ चीज़ उसमें एंटर हो रही है. फिर वो कहता है कि अचानक जो मुझे फील होता है कि एक उस डार्क स्नो में जो आसपास ठंड पड़ी हुई है, बर्फ़ पड़ी हुई है, उसमें एक फॉक्स की नोज़ है जो कि किसी ट्विग यानी जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं उसको टच करती है, और जो उसकी आंखें हैं वो एक तरह से दे आर गिविंग अ काइंड ऑफ मूवमेंट, यानी वो वहाँ पे नज़र आती हैं. और अगेन वो मुझे लग रहा है कि ये जो भी चीज़ है ये मेरे करीब से करीब तर आती जा रही है. सो ये जो एक तरह से डिसजॉइन कर रही है उसकी आइज़ एक मोमेंट के लिए इस चीज़ में कि वो फील कर रहा है कि कुछ ना कुछ है जो मेरे आसपास आ रहा है. बेशक वो फॉक्स की नोज़ जो टच हुई उस ट्रिक को, उससे उसे किसी की आमद का एहसास हुआ. अब वो कहता है कि अब ये जो भी चीज़ है जो मेरे पास आ रही है, वट एवर इट, और इट मे बी अ फॉक्स, उसके अब जो पॉज हैं वो प्रिंट कर रहे हैं स्नो के अंदर, यानी निशान छोड़ते जा रहे हैं. और एंड वेरीली मीन्स केयरफुली, और केयरफुली एक बड़ा एक शेडो सा, एक लेम सा शेडो जो कि बड़ा दुबला पतला सा शेडो है. लैग्स जो है बेसिकली दैट मूव्स बिहाइंड, वो उस जानवर के जो भी क्रिएचर आ रही है उसके पीछे पीछे चलता आ रहा है. स्टम्प्स कहते हैं वो जो कट ऑफ लैंड होता है जिसको फसल के बाद काट दिया जाता है. इन अ हॉलो ऑफ अ बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम. सो हॉलो ऑफ अ बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम मीन्स कि बेसिकली ये वो वाली एक इन अ सेंस चीज़ है जिसको मैं देख रहा हूँ कि मेरे करीब से करीब तर आती जा रही है. और ये ऐसी बॉडी है, एक ऐसा जिस्म है जो कि मुझे फील हो रहा है बेसिकली कि इस मूवमेंट को
यानी इस तन्हाई के अंदर अप्रोच कर रहा है. सो बेसिकली ये जो उसकी अप्रोच है, ये उस अप्रोच की बात यहाँ पे की जा रही है कि वो करीब से करीब तर आती जा रही है, फुटप्रिंट्स वहाँ पे छोड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये बॉडी मुझे विजिबल हो रही है और मुझे एक एनिमल का शेडो फील हो रहा है जो कि एक ट्रंक, ब्रोकन ट्रंक ऑफ ट्री के आसपास से गुजरता हुआ, और अचानक मुझे इसकी फिजिकल अपीयरेंस शो होती है, यानी आई कम टू रियलाइज कि ये एक फॉक्स है. सो फर्स्ट स्टैंजा में वो ये कहता है कि अक्रॉस क्लियरिंग्स एंड आई. सो वो जो क्लियरिंग्स हैं, जो कि क्लियर माहौल है, आसपास जो साफ जगह है, वहाँ पे मुझे अब नज़र आती हैं आइज़ इसकी. अ वाइड डीपनिंग ग्रीननेस. अब फॉक्स की आइज़ नॉर्मली ग्रीन होती हैं, तो और जो ग्रीनरी आसपास है उससे इंस्पायर होते हुए वो कह रहा है कि इससे ग्रीनरी में इजाफा हो रहा है, जो कि ग्रीन बैकग्राउंड में ग्रीन आइज मैं देख रहा हूँ जो कि बड़ी ब्रिलियंटली कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं और जैसे वो अपने किसी काम से आई हो. जिस तरह आपने एनिमल्स को देखा होगा शिकार करते हुए, तो बड़ा एहतियात से वो चलते आ रहे होते हैं और बड़ा ध्यान से देख रहे होते हैं कि हमने किस तरह कहाँ पे हमला करना है, और उनकी नज़र बिल्कुल अपने शिकार पे होती है और वो बिल्कुल उस शिकार को देखते हुए उसकी तरफ, यानी उनकी कंसंट्रेशन फुल टाइम उस जगह पे है. और फिर वो कहता है कि और अचानक वो जो वो जो शॉप स्टिंक है उसकी मैं उसे सुनता हूँ, सूंघता हूँ, मुझे फील होता है कि यहाँ पे आसपास जो है वो फॉक्स आ चुकी है, और वो यानी मुझे इतने करीब आ गई है मेरे कि मुझे उसकी स्मेल आ रही है बॉडी की, और अचानक वो जंप करती है और मेरे सर के अंदर घुस जाती है. अभी भी अंधेरा है, क्लॉक जो है वो टिक कर रही है, लेकिन जो पेज है दैट इज प्रिंटेड. So as if the fox became a part of the poet's personality, वो शायद उसका पार्ट बन गया. So ये जो पोएम है ये अब एक क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में, कि पोइट है, ही वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग, और जिस तरह आमद होती है ये एक तरह से आमद हो रही है पोइट पे. तो ये जो फॉक्स का आना है, फॉक्स को वैसे एक क्लेवर चीज़ कहते हैं, और फेबल्स में, स्टोरीज में हम इसको एक बड़ा क्लेवर एनिमल समझते हैं. सो वो जो क्लेवर है ये इसको उस पोइटिक इंस्टिंक्ट से, उस इंट्यूशन से, उस आमद से तशबीह देते हुए इसको उससे लिंक कर रहा है. So basically, the poet calls intuition or inspiration for writing as a thought fox and gives a creative idea like the shape of a fox. He does not do so without any reason. Fox in our culture is always a very clever thing. तो ये उसको उससे लिंक करते हुए कहता है कि फॉक्स जो है वो आई, उससे पहले पेज ब्लैंक था, फिर ऐसा ऐसा उसके करीब आई और फिर उसने कॉन्सेंट्रेट किया, वो जो कॉन्सेंट्रेशन से उसने अटैक किया, पोइट के माइंड में गई. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिव प्रोसेस. द पोएम इज वेरी simple, very easy to understand, and this is all about the creative process जिसमें एक पोइट सोच रहा होता है और फिर इन द एंड इवेंचुअली ही रीचेस सर्टेन डिसीजन. और वो डिसीजन क्या है? बेसिकली ही गेट्स टू नो व्हाट ही फील्स अबाउट सर्टेन थिंग्स, और वो जो उसने सोचा वो एक चीज़ उसके माइंड में आ गई, आइडियाज़ डेवलप हो गए, क्रिएटिविटी आ गई, उसने चीज़ों को लिख दिया. सो दैट इज़ ऑल ही इज़ डिस्क्राइबिंग इन द थॉट फॉक्स.